Welcome everyone in the ring theory class. Today's topic is characteristic of a ring. We are going to continue our discussion from where we left yesterday. So yesterday we have discussed the characteristic of a ring, including the definition, and then we proved two theorems, namely 13.3 and 13.4 from our textbook, Joseph Gallian. And the characteristic of a ring is defined on the based on the additive property of a ring. Fine. So this is the definition what we have explored yesterday. So if we know that if R is a ring, then R plus is an abelian group, and then if there exists a natural number n such that nx equals to 0 for all x, this should be noted, belongs to R, then we say that such a n is to be the characteristic of that particular ring, not that of an element. Okay, so characteristic is defined for a ring, or whole ring. So characteristic of that ring is n. If further no such integer exists, then we say that the characteristic of that ring is 0. So there may be two possibilities, either 0 or a finite number. Fine. This n should be the least n such that this holds. Fine. So this was the definition, and then we have two results. Because in a general ring, it is it is sometimes tough to find the characteristic of that ring, because we need to verify this property for that particular n for all elements. So it is somewhat difficult to claim that a particular number n is to be the characteristic of that particular ring. Fine. So the things becomes very easy if that ring has unity. So as we all know that unity may not be the member of that a ring, and of course there are many other properties which in general a ring may not have. So but thing is that here we need only unity, because if you see here in the definition, this should hold for all x. For all x belongs to R. So if a ring has unity, that is 1, so at some point of time, x is going to take the value x equals to 1. So if it is going to be true for all x, then it is going to be true for the unity also. So the things becomes very easy. So the result is that if a ring R has unity, then if one has infinite order under addition, then the one has infinite order. यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एलिमेंट के ऑर्डर की. ध्यान रहे, ऑर्डर ऑफ 1 इज इनफाइनाइट. आप समझ रहे हैं कि एज ए ग्रुप जब हम बात करते हैं तो एडिटिव ग्रुप की बात करते हैं तो फाइन. So in the last semester we know that what we mean by the order of an element in an additive group. N is said to be order of an element A if n times of A equals to 0. That is additive identity, where n is the least positive integer such that n times of A equals to 0. Fine. So
if no such n exists, then the order is 0. It means order is infinity. In case we can take the additive group Z under addition. Okay. So each element, order of element, we can talk about this order of identity, that is 1 here, because additive identity is here. If you talk about the 0 is 0, but what about the element? Element is 1, 2, and plus minus 1, plus minus 2, and so on, something like this. Okay. So of course, this is also a ring now with the usual multiplication, because multiplication is associative here. So if one has order n under addition, then the characteristic of R is n. So this we proved in the last class yesterday. So next result we proved that the characteristic of an integral domain is either 0 or prime. Fine. So there are two possibilities, either 0 or n. So if in particular that particular ring is an integral domain, so of course integral domain is also a ring. So 0 is always there. So that particular n, we proved that in case of integral domain has to be a prime P. Fine. So this was what we discussed yesterday. So let us move further. The result we proved, based on that we can conclude some more results, because we know that every finite integral domain is a field. Fine. And every field is an integral domain. So because this result is true for integral domain, the same result is also true for an integral domain. So here we have a note that says every field is an integral domain. So the characteristic of a field is either 0 or a prime. Fine. So further we have some more results. This is in parallel with the properties of order of an element in a group. So what we know about the order, if order of an element, if order of A is equals to n, and then this implies that A to the power n equals to the identity. And if we have A to the power equals to the identity, then this makes us to say that n should divide m. Fine. Because this has to be a least number. Fine. So ये जो m होगा ये n का multiple ही होगा. ठीक है ना? It means n should divide m. So there is a result in parallel with this result about the characteristic, because the characteristic is defined on the basis of order of an element. Fine. So here we go with another result 1. Let R be a ring with characteristic n. Fine. And suppose n times of A equals to 0 for all A belongs to R and for some positive integer m. Prove that n divides m. So this is the result we are going to prove. So here what we have been given, characteristic of R, the ring is n. Okay. And m times of A equals to 0 for all A belongs to R and for some positive integer m. Okay, so we need to prove that n
divides m. Fine. So the information what we have just written here. So let us start the proof. Since characteristic of R is n, so this would be the smallest such integer. Fine. और ये भी given है कि m times of a equals to 0 for all a and a belongs to R and m belongs to the set of positive integer. Fine. So one thing is that we note that because n is the least, fine, characteristic of R equals to n. This would imply that n times of a equals to 0 for all a belongs to R and some positive integer n which is the least such integer. Fine. So जब n जो है लीस्ट इंटीजर ऐसा है जिसके लिए होल्ड n टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो रहा है, so it is sure that m has to be greater than n. So this implies that m has to be greater than, या तो इसके बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा. Fine. So now by division algorithm, we can write m equals to n times of q plus r. Okay, where r is the remainder when m divided by n, and q is quotient. All we know, that is r, the remainder, has to be greater than or equals to 0 and should be less than n, the divided, जिससे हम divide कर रहे हैं. Fine. So let's move further. Okay. So consider the case. Consider the case. अब यहाँ पे जो है if we can prove that r has to be 0, तो बात बन जाएगी. ठीक है ना. It means क्या हो जाएगा कि n जो है m को divide कर रहा होगा. ठीक है ना. So we need to prove basically that r has to be 0. Fine. Consider the case, या फिर हम ऐसे करते हैं, इसको हम क्लेम कर देते हैं. Fine. So to prove n divides m, we need to establish r equals to 0. Fine. So for this, let us consider the case first. Consider the case when r is greater than 0 and less than n. Fine. So what we have, 0, m times of a equals to 0. We know, and then for m we can write here m can be written as q times of n times of q plus r. So n times of q plus r, and then we can write a here, and then as all we know, because in a ring, distribution over fine. So we can write here q, और associative भी होता है, तो हम इसको एक दो स्टेप इसमें कंसाइज कर दे रहा हूँ, r times of a.
फाइन। अब ये n times of a because n is characteristic of r, so this has to be 0. Fine. So this is equals to q times of 0 plus r times of a, that is ra, because this is nothing but 0. Fine. So what we have, this implies that 0 equals to r times of a. Okay. And r क्या है? r 0 से n के बीच में है. Fine. So ये क्या कर रहा है? Because the n was the least, this is a contradiction. This is contradiction as characteristic of r equals to n. Fine. That is n is the least positive integer such that n times of a equals to 0. तो लेकिन इससे छोटा एक मिल जा रहा है ना, n से छोटा मिल जा रहा है, r जो है n से छोटा है, ऐसा मिल जा रहा है, जो इसलिए ये हो रहा है, ठीक ना, जो कि absurd है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. So we are forced to take r equals to 0, and in this case m equals to n times of q plus 0. This implies that m equals to n times of q, and this implies that n divides m. Fine. So this proves the result. I hope thing is clear to you. If you have any doubt, please. Okay, if not, then let us move further. So we have another result about the integral domain. If D is an integral domain and n times of a equals to 0 for some non-zero a is not 0 in D, that is in integral domain, and non-zero integer n. Prove that D is a finite characteristic. So integral domain जो है उसका finite characteristic होगा. Okay. Of course ये finite characteristic तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इसके अलावा because we don't know that कि वो क्या होगा और जो n है उसका इससे क्या रिलेशन है. So there is another question here. What is the relation between characteristic of D and n? This is the major part. Fine. So anyone can guess because अभी हम लोगों ने यहाँ देखा ये जो रिजल्ट थे, इंटीग्रल डोमेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, या तो 0 होगा या तो प्राइम होगा. ठीक है ना. In any case, this is going to be a prime. This is going to be a finite number. Fine. कितना भी बड़ा हो लेकिन होगा तो वही फाइनाइट. ठीक है ना. सो पहला पार्ट ये कि बस फाइनाइट करना है, और बट दूसरा इंटरेस्टिंग है कि क्या रिलेशन होगा बिटवीन n और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D और n में. सो एनी आइडिया? एनीवन? एनीवन? अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ना, उसी से रिलेटेड है. ओके, लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. क्लियर है, जब हम m टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, फाइन, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, सपोज इन केस ऑफ रिंग की बात अगर मैं करूं, और दूसरा अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग r इक्वल्स टू n है. सो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया n सो डिवाइड्स क्या है, m हो जाएगा ना. ठीक है ना, m हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें हैं.
ये तो ऑब्वियस सी चीज लगती है कि हो जाएगा, बट यहाँ पे जो है ना फॉर ऑल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज ध्यान देंगे, ठीक है ना। जो इसमें पर्टिकुलर पॉइंट है वो ये है फॉर सम, फॉर ऑल नहीं लिखा। अगर फॉर ऑल लिखा होता तो फिर हम तुरंत कह सकते थे, लेकिन ऐसी चीज इसलिए किस में हो रही है, इंटीग्रल डोमेन में हो रही है। और जब हमें यहाँ पे बात आई इसके पहले, तो अ, यहाँ सब हमने देखा तो यही मान के हमने किया था, फॉर ऑल यूज करके कर रहे थे। तो इंटीग्रल डोमेन में चीजें बहुत ही आसान हो जाती हैं, ठीक है ना, कि हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, सारे एलिमेंट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए ऐसा हो गया तो उसका करेक्टरिस्टिक एक तो फाइनाइट होगा, और दूसरा जो रिलेशन होगा वो हमें पता चल जाएगा कि क्या होगा, यानी उसके हमें मल्टीपल मिल जाएंगे कि क्या क्या उसके हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या होंगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक की, वो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा एन जो होगा ना वो कैरेक्टरिस्टिक से डिवाइड हो रहा होगा, फाइन। इसका मतलब ये है एन जो होगा ना या तो कैरेक्टरिस्टिक खुद हो जाएगा या तो उससे बड़ा होगा उसका मल्टीपल होकर के, फाइन। ओके, so let us start. Given that n times of a equals to 0 for some a is not equals to 0 belongs to D, and n is not equals b equals to 0 belongs to the set of natural number. Okay, fine. So let us see n times of a equals to 0. Okay, so this would imply that n times of a times of x, दोनों को राइट से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, बिकॉज ये कहाँ का एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है। इनफैक्ट मोर प्रिसाइजली इफ यू से दैट इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट है, तो n टाइम्स ऑफ a भी d का ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। एडिटिव ग्रुप है, होता है d प्लस अगर हम बात करें तो रिंग में, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन इसको एसोसिएटिव भी होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। सो 0 टाइम्स ऑफ x ये हो जाएगा, फाइन। एंड दिस वुड इम्प्लाई दैट n टाइम्स ऑफ a एंड x इक्वल्स टू 0 for all x belongs to that integral domain, fine. So this is equals to n times of a, इसको हम लिख सकते हैं बिकॉज वी कैन यूज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ d प्लस, सो a plus a n copies, so equals times of x equals to 0. This is true for all x belongs to the integral domain D. This implies that let us use the property of distribution over addition. So we have ax plus a times of x plus dot 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 plus a times of x equals to 0, and this is true for all x belongs to D, fine. So this is equals to, we can take a common from here. Let us take a common, x plus dot 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 plus x, this is equals to 0. This addition in the bracket is n copies of x, so for all x belongs to D. This implies that a times of nx, a times of nx, because okay, a times of nx equals to 0, fine. And this is equals to for all x belongs to integral domain D, fine. So this implies that either a equals to 0 or n times of x equals to 0, and this is true for all x belongs to the integral domain D, fine. और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि D हमारा जो है ये एक इंटीग्रल डोमेन है, fine, because D is an ID. पॉसिबली मैं कल से आप लोगों को एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करवाना शुरू करूंगा, ठीक है ना, क्लास में ही मैं हिंट दूंगा।
सो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे ये यूज कर रहे हैं तो इसका वहां पे होगा, ठीक है ना. सो दिस implies that n times of x equals to 0 for all x belongs to d. ये इसलिए हो रहा है, वी आर फोर्स्ड दिस बिकॉज ए इज नॉन जीरो बाई एजम्पशन. फाइन, ये आप हमें पता है, ठीक है. सो ये अब क्या डेफिनेशन है जो मिल रहा है हमें, वो डेफिनेशन क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन मिल रहा है, ठीक है ना. बट वी डोंट नो दैट दिस एन is least or not, but we are pretty very sure that this n has to be a finite number because this is an integer. For some integer we have already assumed that. Fine, assumption में है. So hence a characteristic of d is a finite नंबर. ऑफ कोर्स इन जनरल हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होगा आईडी की, या तो फिर प्राइम होने वाला है, ठीक है. सो सेकंड जो इसमें पार्ट है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक दिस वन एंड एन में क्या रिलेशन हमें, ठीक है ना. सो वी कैन टेक दैट इज assume that characteristic of d equals to letter this is say m. So then m is the smallest positive integer such that m times of x equals to 0 for all x belongs to integral domain D. So अभी जो हम लोगों ने प्रूफ किया लास्ट एग्जांपल, so we must have characteristic of D should divide n, that is m should divide n. Fine. So with this the proof finished. Okay, let us see some more result. There are two more results in relation with this. They are that is let R be a non-zero ring such that x square equals to x for all x in a ring, and then that R is commutative with characteristic 2. And then if x cube equals to x for all x, then prove that characteristic of this is 6. Fine. So this is a result related with a ring. Fine. इतना कम्यूटेटिविटी तक के लिए आई होप कि मैंने आप लोगों को कभी क्वेश्चन में लिखाया रहा होगा, ठीक है ना. सो आप कहें तो मैं एक को प्रूफ कर देता हूँ, फर्स्ट वाले को, और सेकंड को फिर आपको प्रूफ करवा दूंगा कहेंगे तो, अदरवाइज यू कैन ट्राई योरसेल्फ. ओके ओके. सो प्रूफ ऑफ रिजल्ट 3. प्रूफ रिजल्ट 3 का. फाइन. सो पहले हमें प्रूफ करना है कि ये कम्यूटेटिव है. फाइन. और कम्यूटेटिव के बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक उसकी हमें प्रूफ करनी होगी कि वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी जो है वो 2 होने जा रहा हो रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. Given that what we have written x we have written, so given that x square equals to x, and this is true for all x belongs to that ring, particular ring, ठीक है ना. Okay, so since x plus x, because additive plus के अंदर में commutative group होता है, so एडिशन तो क्लोज हो गई. So x plus x square equals to होगा x plus x के, and this is also true for all x belongs to
आर। फाइन, ये रिजल्ट जो है ये ट्रू है सारे x के लिए जो r में बिलोंग कर रहे हैं, तो x प्लस एक्स भी r में बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये ट्रू होगा। सो वी कैन राइट इट x प्लस x। पहले मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि ये जो है कम्यूटेटिव है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। सो वी कैन राइट लाइक दिस इक्वल्स टू x प्लस x। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो x टाइम्स ऑफ x प्लस x टाइम्स ऑफ x प्लस x टाइम्स ऑफ x प्लस x टाइम्स ऑफ x लेफ्ट साइड, और राइट में x प्लस x आएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन का यूज करके, एंड देन वी हैव वी कैन राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने बेसिक प्रॉपर्टीज जो रिंग की थी उसमें हमने प्रूफ किया था x। फाइन, बट using this property we have x plus x plus x plus x, this is equals to x plus x, using x square equals to x. Fine. So as we know that ग्रुप में R प्लस में जो है कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड होगा, ठीक है ना। इन जनरल रिंग में मल्टीप्लिकेशन का कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होता, लेकिन सिंस R प्लस एक अबेलियन ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है, सो कैंसिलेशन लॉ इसमें होल्ड होगा। फाइन, सो यूजिंग कैंसिलेशन लॉ वी हैव x प्लस x इक्वल्स टू 0। फाइन, so let me write this number 1. We shall be using this result, okay, in later stage. Fine, so this implies that x equals to negative times of x for all x belongs to the ring R. Fine, so we are going to use this one in later stages. Okay, so now अब इसको हमें अबेलियन प्रूफ करना है, R को अबेलियन प्रूफ करना है। सो हम यहाँ पे एडिटिव अबेलियन तो है ही, इसका मतलब है हम प्रूफ क्या करने जा, हम प्रूफ ये करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में अबेलियन है। अगर दो एलिमेंट ए बी हैं या फिर से एक्स वाई है, सो एक्स वाई हैज टू बी इक्वल्स टू वाई एक्स। फाइन, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। फाइन, सो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स टू ring R, then their sum is also a member of R. Fine, so ये imply कर देगा x plus y whole square equals to x plus y using this result. Fine, so let us see. Then we have x plus y equals to x plus y, और इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूशन और एडिशन यूज करेंगे तो ये आएगा एक्स एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई वाई इक्वल्स टू एक्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स वाई एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। फाइन, so now we use x square equals to x, so x plus yx plus xy plus y equals to x plus y, x plus y. Again we are using x square equals to x and y square equals to y in R as it is given already. So in additive group में जो cancellation law है होता है उसको हम इसमें apply करेंगे, so yx plus xy equals to it will be 0. Fine, so ये हम ले रहे हैं cancellation law से, law in R plus. Fine, okay, so fine, so this implies that y times of x equals to minus times of x times of y. Okay, so
दिस इज इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव टाइम्स ऑफ x, नेगेटिव टाइम्स ऑफ x अगर हम देखें यहाँ से तो कितने के इक्वल है, x के इक्वल है, राइट। सो x के इक्वल है, सो दिस विल बी x, we can mark it that is 1 dash, fine. So using 1 dash, fine. So this is true for all x y belongs to R. So this implies that R is commutative. So we are done with one part. Now we are left to prove that the characteristic of this is 2. So how come we can prove this one? Any idea? सर यूनिटी पहले पता करेंगे सर। यूनिटी पहले पता करेंगे। यूनिटी पता करके फिर क्या करें? x equal to 0. This implies that 2x equal to 0 for all x belongs to that ring. 2 is the character. How come you are going to prove? You just tell me, I will write. Okay. Yeah, tell me. I'm writing. Please don't fear of that something is to be wrong. Put. How come? One square equal to 1. We have this result. No, this we have, already. X plus x equals to 0, So we have from 1, maybe from 1, x plus x equals to 0. Fine. So this अब ये additive group तो है ही, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हो ना. And this was true for all x belongs to R. ठीक है. Hello. Yes sir. So yes sir. हाँ, so this is true for all x equals to R. Now thing is that कि 2 जो है ये कैंडिडेट है कैरेक्टरिस्टिक होने का. अब क्वेश्चन ये है क्या 1 हो सकता है क्या? ठीक है, या 1 हो सकता है या 0 भी हो सकता है, ठीक है ना. लेकिन ऐसे एक ऐसा 2 एग्जिस्ट कर रहा है जो इसके लिए, बट ये लिस्ट होगा क्या x इक्वल्स टू 0 तो है नहीं, ठीक है ना. क्योंकि अगर यहाँ पे हम x लिखेंगे, सपोज हम कहते हैं कि 1 हो जाए, 1 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये हमें क्या फोर्स कर देगा? ये हमें ये फोर्स करेगा कि x हैज टू बी 0. यस सर. तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा, सारे के लिए ट्रू नहीं होगा. फाइन. सो इस केस में जो है दिस इंप्लाई कर देगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R इक्वल्स टू 2. ठीक है ना. अब द सेकेंड वाला जो है आप अपने से एक बार ट्राई, इफ यू कैन डू. फाइन. The result number 4. Okay, fine. And maybe it may come in exercise problems, जो कि हम कल से स्टार्ट करने जाएंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को. ओके, चैप्टर नंबर 12 के. फाइन. एक और रिजल्ट है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि जब हम रिंग थियरी पढ़ते हैं और फिर फील्ड में जाते हैं, फील्ड स्ट्रक्चर पढ़ने, एज ऑफ नाउ हम लोग केवल डेफिनेशन और सम एग्जांपल ही जानते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज ऑर्डर, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना. सो एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी idea about number of elements in a ring या फिर इंटीग्रल डोमेन. हम इसकी बात करें तो ठीक है ना, कि अब इसमें कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं. जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था, एग्जांपल क्या देखा था रिंग में कि Zn में, ठीक है ना,
Zn में, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं, ठीक ना। तो हर मतलब ऐसा भी रिंग हमें मिल जाती है जिसमें एक एलिमेंट हो, दो एलिमेंट हो, तीन एलिमेंट हो, चार एलिमेंट हो, है ना। इस तरीके से n एलिमेंट्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो ऐसा भी हमें रिंग मिल जाता है। और जब हम इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं तो ये जो है नंबर्स इनके जो है ये ZP होना होता है इसको, है ना। हम लोगों ने देखा था, नहीं फील्ड में ZP होना होता है, ये प्राइम होता है, ठीक है ना। सो इन जनरल हम रिंग में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में नहीं बात कर पाते, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। बट व्हाट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर फॉर्म हमें पता चल जाए कि किस फॉर्म के होंगे जो एलिमेंट्स होंगे, उस किस फॉर्म में हम उनको लिख पाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फील्ड, ठीक है ना। लेकिन फील्ड में हम इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। सो इन जनरल अगर वो फाइनाइट फील्ड है, इन ए फाइनाइट फील्ड, इनफाइनाइट फील्ड का एग्जांपल जानते हो आप लोग, एनीवन क्विक? जेड। The real number. हाँ यस, सेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। और हमने इसको भी पढ़ा था, है ना, प्राइम हो रहा था तो, Yes, ठीक है, sir. ओके। सो इस तरीके से हम मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे वहां पे, ओके।